प्रचोदयात्। वं आपदुत्तरणाय अजमालापदाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षणभैरवाय मम दारिद्र्यवित्तंशनाय श्रीमहाभैरवाय नमः। वं आपदुत्तरणाय अजमाला
लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विध्वंसनाय श्री महाभैरवाय नमः। वं आपदुत्तरणाय अजमालापदाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विध्वंसनाय श्री महाभैरवाय नमः। वं आपदुत्तरणाय अजमालापदाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विध्वंसनाय श्री महाभैरवाय नमः। He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। Okay, so good evening everyone. स्वागत है आप सभी का to the 93rd Q&A session.
I think you will not get out until we reach that 100 mark. So another 7 to go. Good. Chalo. So as we are all here, and I could see Chandra Prakash ji has already raised his hand. I think I already know the answer. So let's unfold his mic so that he can ask the question. I believe I know the answer. So let's see if we do. Haribhai, can you please help him? प्रणाम मानव जी। प्रणाम चंद्र प्रकाश जी। मेरे 2 सवाल है। अरे वाह, चलो कोई नहीं, पूछ लो। पहला सवाल है धनाकर्षण भैरव 2.0 नेक्स्ट दिसंबर में है या नहीं। दूसरा, और कल चंद्र ग्रहण था, तो चंद्र ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है, बोलते हैं शाम को देखना है नहीं देखना, खाना नहीं खाना, बाहर नहीं निकलना। साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों रास्तों में आप इस प्रश्न का उत्तर पे कुछ प्रकाश डालेंगे बोलकर कुछ आशा करता हूँ। ओके, चंद्र प्रकाश डाले या सूर्य प्रकाश डाले, बोलो। प्रकाश तो आपको डाल ही जो देंगे। अच्छा लगे। ओके, चलो द फर्स्ट क्वेश्चन, धनाकर्षण भैरव है या नहीं December 21st? ओह, थैंक यू। November 25th भैरव कोड़ा for 2 days retreat। और कुछ बताओ, और भी प्रोग्राम्स के डिटेल्स दे दूं? बस मैं उधर चले गया सीधा। So this month 24th night will be starting, 25th 26th will be there at Bhairav Kona, then 26th will be starting, 27th morning will be back in Hyderabad. So 2 days, not 1.5 day, I believe, 2 days. So stoppage will be at Podli. So some people are smiling right now, you can see that. Okay, so that's going to be one. Second, December 21st is the Dhanaakarshan Bhairav. So that is done. Okay. So anyways, Haribhai will be giving you more details, might be towards the end of the session. Then अभी आते हैं आपके पास आपके दूसरे सवाल का, चंद्र ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये तो चंद्र ग्रहण से पहले पूछना चाहिए था। चलो, so we are very confident that we will see the next Chandra Grahan anyways. So you should be knowing for that, right? चलो, Okay. चंद्र ग्रहण देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? Okay. See, if you go by the ग्रह नक्षत्र, अगर आप नक्षत्र के हिसाब से जाएंगे, 24 नक्षत्र जो हैं, ग्रह और नक्षत्र जो 24 हैं, उनके हिसाब से जिसका अलाइनमेंट सही होता है, ओके, जिसका अलाइनमेंट सही होता है वो लोग देख सकते हैं, जिनका अलाइनमेंट सही नहीं है वो नहीं देख सकते। इट्स जस्ट लाइक आई गिव यू एन वेरी फनी आंसर, इज इट ओके? एक मजेदार उत्तर दे दो, शायद सबको समझ में आ जाए। जी जी, चलेगा। अच्छा, एक बात बताओ, आपको अपनी पत्नी का चेहरा देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए? देखना चाहिए इसमें। देखना चाहिए। आप जब वो खुश होते हैं तब सामने जाना सही है, या जब वो गुस्से में है तब सामने जाना सही है? खुश है जब। हाँ, तो वैसे मतलब इट मीन्स लाइक विच एवर इज इन फेवरेबल टू यू, जो आपके राशि फल के हिसाब से, आपके ग्रह नक्षत्रों की स्थितियों के हिसाब से अगर चंद्र ग्रहण सही है तो आप देख सकते हो, अगर आपका सही नहीं है, आपको वर्जित है। तो उसके लिए अगर आप पंचांग देखोगे, उसमें क्लियरली बता दिया जाएगा कि कौन कौन से राशि वाले वो देख सकते हैं, कौन कौन से राशि वाले नहीं देख सकते। ओके, उसका आपको बहुत क्लियरली मिल जाएगा। हालांकि अभी कई सारे लोग ये कहते हैं कि मुझे देखना नहीं था, मैंने तो रास्ते पे जा रहा था, तब क्या करूं, दिख गया तो दोष लगेगा, यही है ना। तो उसका भी निवारण के भी रास्ते रहते हैं, बट जनरली अगर आप साइंटिफिकली पूछे तो क्या है, जैसे मुझे पूछा भी गया था कि व्हाई वी शुड नॉट ईट राइस, चावल क्यों नहीं खाना उस टाइम पे,
व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? उसके दो कारण हैं, वन साइंटिफिक वन स्पिरिचुअल। साइंटिफिक कारण यह है कि बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट हैपेंस ड्यूरिंग दैट टाइम, वो समय में जब सूरज की किरणें जिस तरीके से धरती के ऊपर गिरती हैं और चंद्रमा के ऊपर जाके गिरती है, ड्यूरिंग दैट टाइम अ सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल इज रिलीज्ड, जिसके वजह से आपका डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, एंड स्पेशली इट हैज ए ग्रेटर इंपैक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। इसलिए कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड खाना मना है उस टाइम पे। अगर आप क्लियरली देखेंगे कि एक विधि होता है, 8 से 10 घंटे पहले ही चूल्हे को बंद कर दिया जाता है हमारे वहां पे। क्यों बंद कर दिया जाता है? एनी फूड दैट यू कुक, उसे अगर इट इज जनरली स्टेपल फूड क्या है? राइस है। तो अगर आप राइस खाते हो तो राइस को पचाने के लिए भी समय लगता है आपको। इफ यू आर नॉट क्लोजिंग योर फूड बिफोर ए सर्टेन टाइम, तो वो राइस रहेगा पेट में, और तभी वो समय में अगर वो केमिकल रिएक्शन होता है तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको। इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए उस समय पे। दूसरा स्पिरिचुअल वे, चावल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? हम जानते हैं कि हम पिंडदान करने के समय चावल और तिल का इस्तेमाल किया जाता है ना? जी। हाँ, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम वो जो पिंडदान करते हैं तो वो शरीर बने, और जिस आत्मा को अगर उनको अभी तक शरीर नहीं बना मिला, तो ये जो अन्न का जो दाना है यही, इसी से तो शरीर बनता है, तो इसी से जो शरीर बने उस समय वो शरीर से उनको लाभ मिले, उनको वो शरीर मिल गए तो उनको भी जीवन का प्राप्ति हो। अगर उससे जीवन बनता है और उस जीवन को एक ऐसे मुहूर्त पे आप खाते हो जिसमें एक चंद्रमा पे दाग लगता है, मतलब जैसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग एक चीज देखते हैं कि वी जस्ट सी इनटू द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ, कि साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है इट इज नॉट, कोई चंद्र ग्रहण कुछ नहीं होता है, इट इज जस्ट द अर्थ कमिंग इन बिटवीन द सन एंड द मून। यही है ना? जी। सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जिसका साया उसके ऊपर गिरता है। हालांकि क्या हमारे जो ग्रंथ हैं, जो भी आगम निगम है, उसमें जिस सूर्य की बात की गई, ये जो सूर्य हम देख पाते हैं वो नहीं है, ये तो क्षुद्रतम सूर्य है। दिस इज द स्मॉलेस्ट सन। सो सूर्य और चंद्र और राहु और केतु, ये जो हैं, इनकी विधि अलग है, इनका एक तरीके का चाल है, मतलब वॉकिंग स्टेप्स है उनके। वो जब उसके करीब आता है तो इट क्रिएट्स नेगेटिव रिजल्ट्स निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहोगे नेगेटिव रिजल्ट क्या होता है? अगर आप पेट्रोल टैंक में जाते हो, ठीक है, और अगर आप वहां पे माचिस जलाते हो तो क्या होगा? जलने के चांसेस है पूरा। पेट्रोल खराब है क्या? पेट्रोल खराब नहीं है। आग खराब है? नहीं, कॉम्बिनेशन इज बैड। जी। सो सिमिलरली इन सर्टेन फेजेस ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि हम ग्रह नक्षत्रों को मानते हैं, उस समय ग्रह नक्षत्र की, मतलब मानो ये आग और पेट्रोल जैसा काम करता है वो, तो उस समय अगर आप उसके पास रहते हो तो आपके ऊपर इंपैक्ट होगा नहीं होगा? 100% जबरदस्त होगा। सो उसी प्रकार से जब एक चंद्रमा, जो हम फिजिकल चंद्रमा में देखते हैं, उसका जो इंपैक्ट है लहरों के ऊपर ऑन फुल मून डे, कितना उछाल लेके आता है, तो अगर उतना उछाल वो सिर्फ फुल मून नाइट में लेके आ सकता है, इस दिन भी जब चंद्र ग्रहण लगता है तब फुल मून होना जरूरी है? फुल मून है तभी चंद्र ग्रहण हो सकता है या नहीं? जी। हाँ। सो जब वो होता है तो उसका जो प्रभाव है उसके आपके ऊपर ना पड़े, इसके लिए ये सारे खाने पीने का सामान वर्जित होता है। दूसरा, ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से अच्छे फलदायक है तो आपके लिए अच्छा है, अगर अच्छे फलदायक नहीं है इसलिए आपको वो मना किया जाता है कि देखना नहीं चाहिए। हालांकि आजकल तो सब फोन्स पे आ गए हैं, तो देख लो, डायरेक्ट मत देखो, फोन पे देख लो, क्या प्रॉब्लम? You see that, that's it. ओके। और इसके कई सारे अलग रीजंस भी हैं चंद्रप्रकाश जी, लेकिन वो सारे चीजों को व्याख्या भी करें ना तो हमारा मन मानने को भी तैयार नहीं होगा उस चीजों को, क्योंकि
आप किसी को भी जाके इस सारे चीजों को समझाने की कोशिश करो ना, दे विल बिकम साइंटिस्ट इमीडिएटली। हालांकि साइंस शब्द नहीं पता उनको साइंस का, लेकिन वो आपको साइंटिस्ट बन के समझा देंगे कि खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, हम खाते हैं देखते हैं क्या होता है। हाँ, देख लो ना क्या होता है। और फिर उसके बाद आएगा कि ऐसे तो अलग भी लोग हैं जो मानते भी नहीं है, तो उनका तो कुछ नहीं होता। अच्छा, उनका कुछ नहीं होता समझ में आता है, लेकिन फिर आप उस घर में पैदा होना चाहिए था ना, आपने इस घर में क्यों पैदा हुए? अगर आप जिस घर में पैदा हुए हो उसके कुछ नियम हैं, तो वैसे तो आप सब कुछ खा लेना चाहिए। आप नहीं खाते हो, फिर क्यों नहीं खाते हो? तो इसलिए कुछ चीजों का मायने रखना जरूरी है कि जैसे जो विधियां आपको दी गई है, क्योंकि आप उस कुल में पैदा हुए हो, उस कुल की कुछ रीति कुछ रिवाज हैं, और उस रीति रिवाज नीतियों के हिसाब से अगर आप चलते हो तो आपका जीवन में अच्छा होता है, आपका जीवन सुखमय होता है, आपका जीवन सरल होता है। लेकिन अगर अगर आप उतनी साधना कर चुके हो, ये सारे चीजें के किस चीजों का कोई भी असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। लेकिन क्या आप साधना में उतने अग्रसर हो चुके हो? अगर हो चुके हो तो मैं बताना चाहूंगा कि ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और काल रात्र जो होता है, ये तंत्र विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होते हैं। क्योंकि इसी समय ऐसे द्वार खुलते हैं जिसके जरिए वैसी ऊर्जाएं मिलती हैं। एंड आई कैन ओनली से लाइक द लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड इज वेरी एक्टिव एट दैट टाइम। वाम मार्ग के लिए बहुत अच्छा होता है वो समय। So if you know how to channelize energy, no problem. If you don't know, then it's a problem. Okay? तो अगली बार से देख लेना, देखना है नहीं देखना है उसके हिसाब से प्लान कर लो। बस आपके ऊपर ग्रहण नहीं लगना चाहिए, बस उतना ही चाहते हैं। आपकी प्रकाश हमेशा प्रकाशित रहे। हमारा हाथ आपके हाथ में दे दिए, कुछ नहीं। चलो, धन्यवाद। सो तैयार रहिएगा फिर। 2 डेट्स तो मैंने बोल दिया है आपको। मेरे प्रिपरेशंस में स्टार्ट कर लूंगा। सो बाकी डिटेल्स हरि भाई कैसे भी बता देंगे। सो सम थिंग्स आर गोइंग ऑन। मैंने अपना काम अभी के लिए कर दिया है, अभी आप लोगों का काम है। मैंने मुझे डेट देना था, मैंने डेट दे दिया है, अभी काम इन लोगों का है, फिर उस दिन काम मेरा होगा। ओके, चलिए, धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी। मैंने इसीलिए पहले ही शुरुआत से कहा था, मुझे पता है आप क्या पूछने वाले हो और उसका उत्तर मेरे पास है। ओके, चलिए, धन्यवाद। रेवती जी, I don't have a question. so you want to take us all to the Ganga Oh किनारे God, में लेके जाना I चाहते am हो? Rishikesh returned. So I had such a good time. Every day I went to Paramartha Ashram, I went to the Ganga. It was, I've been going every year, but this year was something different. I think थोड़ा सा ज्यादा समझ में आने लगा है. So maybe I've become more wise right now. They are becoming more religious, it seems. Looks like. So I have no question, but I wanted to introduce my friend Kavita. Yes, she has already introduced herself. No, I have to introduce her. Okay. So Kavita and me have been friends for about 58 years now. And she's my The first and foremost thing is you people don't look like that. So we doubt it. birth certificate दिखा देते हैं. That would be better. So we were right since KG we've been together. And we are the best of friends. And I just told her that she should meet this wonderful family and she should become a part of it. And she herself does a lot of things. So I thought she was apt for, being a part of this family. So Hari bhai, you should make Kavita talk for a minute. About she's experienced these 3-4 sessions and she's really loved every minute of it. So unmute her, no? Let her speak. No, you are saying Kavita, right? Oh, sorry, Sneha. We call her Kavita, but she's Sneha, actually. So in school, she was... I have done that, Hari bhai. Okay.
Pranam Guruji. Pranam Sneha ji. Yeah, thank you so very much, Revati, for introducing me to such a wonderful group. I mean, I've been hearing Guruji ever since, and yeah, I mean, one comes in learning, even if you know, it's better that you come khali so that you can absorb as much as possible. Because everywhere you learn a different module, a different process. And we've been doing regularly your processes since I've learned the Diwali ritual, which is still going on. Yes. And question answer session, I think this is the first one I'm attending. One I missed, I wasn't around, and I've not missed your Sundays ever since I've come to know. The last Sunday, the process also was so beautiful, the one with Nabi, the creation. So everything just comes like together, because whatever maybe I've learned and from and what you speak, so it's all connecting very, very beautifully. So it's like one chadar you're weaving and different colored threads in it. So I'm ever so thankful to you. Thank you, Sneha ji. So good. So as I said on Sunday, like you're welcome to the family. So we'll carry on. Okay. So today I think like people want to give me a break today. No questions. So that's really good. So people are more worried about their answers rather than my throat. So some people have been sending me messages that why are you conducting the session today also? You should take a break. No, you don't know. If there was a session in the college today, I would have been there also, right? Haribhai has given me a break anyways. Okay. Ashwin ji. Ashwin ji, please unmute yourself. So one camera used, one Zoom link used by 3, huh? Both father and sons. Yes. So hope the question is from you, not all those Tejas and Advait. I will pass on the knowledge to them also. Okay, good. Yeah. Manajji, like in Bhagavad Gita, I was just reading some shlokas. I was reading this Sthita Prajna. Okay. So it says the basic meaning is constant wisdom. So can you elaborate? Just okay. Yeah. So one way that people have translated it is Sthita Pragya means constant wisdom that they say. Na? Sthita, they have literally translated it. Sthita means stable. Pragya means wisdom. No, Sthita Pragya is not constant wisdom. Sthita Pragya means to be in the moment right now always. Means the wisdom to stay in the present moment is Sthita Pragya. Ye nahi ki constant knowledge, nahi. To have that knowledge to be in the present. Sthita Pragya means, and the easiest way of understanding it would be being the observer always. Never forgetting that who you are. So Sthita Pragya ho jana. Means I am stabilized myself in this wisdom that I am who I am. And unmovable. Whatever happens. Jaise you see the life of Ram. He has gone through so many torments in his life. जीवन में बहुत सारे चीजें घटी. But why do we call Ram as a god? Why we see him as a god? But there are people, those who go through the similar situations in life, might not be as much as he has gone. लेकिन जिस किसी भी तरीके से जाते हैं हम उनको इंसान मानते हैं, लेकिन राम को हम भगवान मानते हैं. क्योंकि हम राम को भगवान इसलिए मानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ लेकिन वो नहीं बदले. Nothing was able to move him from his stature. हम क्या करते हैं, हम समय दर समय भूलते जाते हैं, समय दर समय घूम जाते हैं, and we keep on tending to move from one place to another. We are so impacted by things, but he was not impacted by the things. He was as calm, quiet and stable in his entire way of living. So उसे स्थिति प्रज्ञा कह सकते हो. Second thing, you might have seen, like when you meditate, you go to a certain space. When I say, like, you see there is alignment within you and you see everything is moving, but that space is not moving. वो क्या होता है? That is also touching onto that base of Sthita Pragyata. So whatever
once you reach to into that space where nothing moves you, it's just like a mountain, it's like a meru, unmovable, then वो शब्द का सही इस्तेमाल किया जा सकता है आज स्थित प्रज्ञ. So being in the now, realizing who you are, ये सारे शब्दों का मतलब स्थित प्रज्ञ हो सकता है. ठीक है? Okay. So good to see that you have started reading Bhagavad Gita. Many of us still dream to do that. Right? So good, at least somebody is reading. And more than just reading, passing it on to the next generation is more important for us. So anything that is good should be passed on, and anything that is good, if it is passed, it is growing. It grows when it is distributed. Okay. Okay. So thank you. Thank you. Anything Jai else? Krishna ji. Okay. Thank you, Hari bhai. Thank you. Thank you. Yeah, Sudha ji, please unmute yourself. प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। उन्होंने जो पूछा अभी, ऐसे में थोड़ा क्रिया योग के बारे में जानना चाहती हूँ, वो क्या होता है? कौन सा? क्रिया योग। क्रिया योग। क्रिया योग के बारे में जानना है आपको। ओके, ठीक है। क्रिया का मतलब क्या है? कर्म। योग, कर्म के द्वारा जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए, वो क्रिया योग है। उसकी पद्धतियां बहुत सारे हैं, जिसको ज्यादातर महाअवतार बाबा जी के साथ जोड़ा गया है, योगड़ा संस्थान के साथ जोड़ा गया है। उनकी जो भी विधियां हैं, जो भी पद्धतियां हैं, उनको क्रिया योग में माना जाता है। और उनके जो भी डिसाइपल्स हैं, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन सबको क्रिया योग में ही ये किया जाता है, मतलब क्या कहते हैं, इनिशिएट किया जाता है। सो क्रिया योग अगेन इट इज कमिंग फ्रॉम नन अदर देन, इफ यू गो टू विज्ञान भैरव अगेन, वो 112 के अंदर क्रिया योग भी है। हम 10 तक जाके रुक गए, थोड़ा आगे चलते तो आपको उसके अंदर क्रिया योग भी मिल जाएगा। वो चाहे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो, वो चाहे क्रिया योग हो, वो चाहे भक्तिपात हो, या चाहे श्वासों की प्रक्रिया हो, या चाहे अब जितने नाम हैं आजकल बहुत सारे प्रचलित है, लेकिन जो भी प्रोसेस है वो सब के सब वो 112 के अंदर से ही निकले हैं। और अगर आप मुझे पूछें कि जो लास्ट संडे मैंने जो प्रक्रिया दिया, वो प्रक्रिया क्या मेरा है? नहीं, वो भी वही 112 के अंदर से ही आया है। तो सुधा जी, जो महाअवतार बाबा जी को जो मानते हैं, वो सब उसी के अंदर इनिशिएट किए जाते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है उनका भी। इट्स रियली, एंड मोर दे आर इनटू दिस मेडिटेटिव प्रोसेसेस। और साथ ही साथ ये होता है कि अगर आप क्रिया योग सही तरीके से करते हैं तो महाअवतार बाबा जी के दर्शन मिलते हैं, ये माना जाता है। अगर किसी को मिलना है वो जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं। एनीथिंग दैट elevates you to a certain level is always admired, always welcome. लेकिन एक ही बात होगा, मैंने पहले भी कह रखा है, जिस दिन उनसे मिलो उस दिन मेरे बारे में पूछ लेना। इतना ही बोलूंगा और कुछ नहीं। फिर उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आप किसके साथ बैठे थे, और वो बताएंगे। And again, these are all are energy processes, meditative processes through which कुंडलिनी का जागरण किया जा सकता है। आपके ईड़ा पिंगला को कैसे जागृत किया जा सकता है, फिर सप्त छेदन जो कहते हो, चक्र भेदन जिसे कहते हो, उसको कैसे किया जा सकता है, उसका ज्ञान मिलता है उसमें। So majorly these are all related to that meditative processes through which your कुंडलिनी जागृत होता है। ओके, सो वो प्रोसेस है। लेकिन अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो, एक बार योगड़ा संस्थान बोल के मारो, उसके साथ आपको बहुत अच्छी तरीके से उसके बारे में पता चल जाएगा। स्वामी योगानंद जी, उनका भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें। लहरी महाशय उनके गुरु थे। उन सबका बहुत सुंदर बुक भी है। उनका एक किताब है, बहुत फेमस है। मेरे पास है किताब, मैं आपको नाम भेज देता हूँ। लिविंग विद द मास्टर्स
लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, ऐसा एक किताब है उनका। तो नहीं, मैंने पढ़ा तो एक क्रिया उसी में था योगानंद जी के उसमें, लेकिन मुझे समझ नहीं आया होता क्या है, इसलिए मैंने आपको पूछा। ओके ओके, नहीं प्रक्रिया वही है, सारे प्रक्रियाएं उसके साथ जो है वो प्रक्रियाएं उसी के साथ चलती हैं। जैसे कि आप की जो कुंडलिनी जागरणी है, और अगेन इट इज ऑल योगा, योगा इनका, लेकिन जो योग है ये सारे मतलब वो अष्टांग योग जैसा नहीं है। They are more into energy and meditative processes of awakening the Kundalini. तो उसके लिए ये लोग बहुत अच्छा इनके बारे में जाना जा सकता है। लेकिन हमने आज तक कौन सा रास्ता छोड़ा है अभी बताओ। अब जितने नाम लो, वो जो जो सीखा है आप सब सीख चुके हो यहाँ पे। You have not left, क्योंकि मुझे एक ही चीज पता है कि अगर शिव ने कहा है कि ये 112 के आगे कुछ नहीं हो सकता, तो 112 के आगे कुछ नहीं हो सकता। शायद किसी दिन हम जब प्रोसेस कराए तो आपको पता चले कि अरे ये प्रोसेस भी उधर है। थैंक यू। ओके, चलो। Hima Bindu. So now she has recently read about something and she has shared it. I was not able to read it anyways. Okay. Yeah, Hima Bindu ji, please tell. Mahadev, I have read one more book long back. There is a description about something called Neela Purusha in that. But that is something like where you reach to a certain level, these, I don't know, I'm not so sure what is called as Neela Purusha, but maybe someone looks like blue entities or something. I wanted to know about this Neela Purusha, Mahadev. Okay. So actually we'll not know about just Neela Purusha, but I am going to do a process about Mantra Purush. Okay. If you do the entire process of Mantra Purush, because उसकी सारी प्रक्रियाएं, और ये करना जरूरी है अभी कुछ लोगों के लिए, because they have reached to a place where they are ready for it. They have started experiencing it in a certain way, but they are not able to know what is happening to them. So when I start initiating on that part of Mantra Purush, उसके बाद Chhaya Purush, Kaya Purush, Neel Purush, and there are alag, they take it different names as per the aura actually. But the core of it is not the Neel Purush. The core of it is Mantra Purush. And it's about, shall I spill some beans? It's about creating another you through mantras. Oh, okay. Are This you is understanding? possible. Okay. This is possible. And we will do it within the next 2-3 months. So don't worry. Okay, Mahadev. So you create another version of you. And as I said, some people have already started experiencing it without knowing it. But they are just... Has it happened to you like you are meditating or you are doing a mantra jap and then you see somebody else is sitting by your side and doing that? No? Behind me, someone is watching. So these are the hues. These are the Kamlender ji ka ho chuka hai. There are 3-4 more people. Those who are asking me, what is this? I said, don't worry. That itself is the indication that you are ready to know that now. And that is the reason, because of these people, all the other people will also go through that process. I thought he was Rama. I didn't know he's... See, that's what I say. If you do the processes correct, you will be amazed by what all you can do. Because why that thing is created, the Mantra Purush is created, is when you are doing a particular kind of sadhana and you are not able to do that many jobs that are required, then
entire mantra purush is created in your form, but that is completely created out of mantras. Okay. Then when you are doing the mantra jap, it is doing the mantra jap. When you are not doing the mantra jap, it is still doing the mantra jap. Okay. It is possible, and you will experience it and you will see it. It is possible. जी महादेव. So when people are Thank you talking so about much. the Neel Purushna, so they are just talking about only a glimpse of it. They are just talking about a fading light. Okay. No, I'm talking about core. I'm talking about something that you can, you see, if these things happen to you, like you are sitting, and why I'm saying this is you should not be frightened. Are ye kya hai? No, it is not the things to be frightened about. It's just like a shadow that you have. Are you afraid of your shadows? No. One who doesn't know, they will be. Are ye kaun hai? Right? But if you know, and more than that, the entire day process, I will check like if I can complete it within 1 day or not. If it can be completed within 1 day, it's okay. If not, we might take 2 days time. But you will see how you are, no, beej ropan kehte hai na, like putting a seed one by one. That's how it will be. It's like putting one seed into one body part of yours. And once it is created, it will create another, it will separate from you and it will create something in front of you. It will not be visible to others, but when you sit down to do your puja, you will experience its presence and you will experience its chanting. You will experience that, oh, this is possible. And pure sattvic, it's not the वाम मार्ग. ये दक्षिण मार्ग का ही है, ये वाम मार्ग का नहीं है. वाम मार्ग में जो होता है वो अलग होता है, ये दक्षिण मार्ग में ही है. Absolutely, Shaji, like creating another robot who will do your work. But that is because certain people, the processes that have been given, the job that you people are doing, because of that, it is going to be. The only thing that I have to decide now is whether it should be only for Mahanirvana group or for all the group. That's the only thing I have to decide. Will it be online also, Mahadev? That's a Hariwise domain. So if he can manage, we'll see. If you can follow the processes, yes. And yes, of course, I will let you know what all the things are required. So we'll learn. It's so magical actually. When you will experience all those things, now you will stop having the questions or doubting the creator. Because you, with your own hands, if you create something, अगर आप अपने हाथों से बना लेते हो तो फिर nothing like anything, na? So we'll see, it's coming. So whatever you have read, it is not just a blasphemy, not something like somebody smoked something pot or something like that and they wrote. No, there are things that and now the question you should ask is, why did that showed up? Do you realize why I say, like, there are certain people, those are getting ready for that and now they are going to experience it. And that's the reason. And some people, so amazingly, Himavenduji, like every room they have one now. Wherever they are going, that is already there in that room. Wonderful. So, Mantra Purush is good. Chaya Purush is something you should be bit careful of. Okay. Then there are other things also. Maya Purush kiya ja sakta hai. आकाश का रूप में पुरुष किया जा सकता है. See, it is पुरुष का मतलब ये नहीं होता है कि जेंडर बायस नहीं होता है वो. It's just a name that has been given to it. So, सूर्य प्रकाश को यूज करके, like utilizing the rays of the sun, the earth, you, and the sky, another thing can be created. And through that, if just by looking at it, you can know if you are going to fall ill, if your work is going to be done or not,
in which day you are going to die. If your death is nearby, you can still see that. ये भी है प्रक्रिया. Everything is available. It's our sages have not left anything that is yet to be discovered, kind of stuff I can say. Only by utilizing the sun ray, the sky, yourself and the earth and your shadow, you can see it. Your shadow, will you believe, like your shadow that is falling on the ground right now because of the sunlight, you will see the same shadow in the sky. You can. Unbelievable. Okay. No, it's not unbelievable. I learned it from my grandfather when I was 6 years old. Okay. 6 साल की उम्र में सीख गया था मैं. So, and it is so clear. और अगर there are signs that you will see in it, and that signs will indicate ये है तो ये हो जाएगा. If this is not happening, you are going to fall ill within the next 2 days. और होके रहेगा. Okay. So it's like using the sky as a mirror to see yourself and knowing what's going to happen to you. And there are certain processes through which, if you see that, there are certain indications through which you will know that within how many days even you are going to leave the body. अब ये नहीं सिखाऊंगा मैं किसी को. Okay. This should not be taught to anyone. Because when life has been given, why are you worried about death? Death to ascension hai. You will go, you will transcend. You should be enjoying your life right now, which has been given to you. So, Ima Binduji, so don't worry. Whatever you have heard, you are going to experience it. That's it. Thank you so much, Mahadev. Thank you. Okay, so no major questions today. I think like we can, Haribhai, if you can have anything to share. Now today, actually, I feel like I have kept your word. The question answer session from 8:30 to 9:30. Rather, people are more very क्या कहते हैं, करुणा. आवाज आ गई. Yes, आवाजी, please unmute yourself. ये क्लास के बदमाश बच्चे जो रहते आ गए. प्रणाम गुरुजी. प्रणाम. जाने नहीं देना है ना, इसलिए सवाल पूछोगे आप? नहीं गुरुजी, आज सवाल नहीं है. आज किसी का एक अनुभव आपको बताना है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए पीछे से. ठीक है? ओके. तो सवाल वही है? नहीं, मेरी मैं एक एग्जाम्पल की तरह से बताती हूँ. मेरी एक फ्रेंड है. ओके. उसके यहाँ नवचंडी पाठ चल रहा है. ओके. नवचंडी पाठ में उसने एक नवाण मंत्र का पुरस्चरण लिया. ओके. और पुरस्चरण के समय काफी सारी माला करनी होती है, 200 माला, और 9 दिन में करना है तो काफी सारी हो जाती थी. तो वो जब उसको समय मिलता था ना, तो वो रात में कर रही थी उस चीज को. और वो चूंकि सारी चौकी बनी हुई थी, सब स्थापित था ऐसा ही, तो उसको अपने पीछे एक बहुत बड़ी आकृति नजर आई. पीछे कोई खड़ा हुआ है. और तो एज यूजली उसने सोचा कि शायद वो पंडित जी जो पूजा कर रहे हैं वो आए होंगे कि दीपक वगैरह कहीं देख लें उसकी बाती वगैरह कुछ. तो जब मुड़ के देखा तो कुछ नहीं था. फिर वो अपने जाप में लग गई, क्योंकि वो दिमाग में ये था ना कि 200 माला पर डे, 225 माला पर डे करनी है, तो कैसे पूरा होगा पुरस्चरण. तो नवाण मंत्र को जाप करना है लगातार. फिर गुरुजी रात का 1 बज रहा था. उसके बाद इतनी जो 7 पीठ बनी हुई थी, सप्तगत मातृकाएं, 9 षोडश मातृकाएं और 64 योगिनी और प्रधान कलश, जितनी भी 7 पीठें बनी हुई थी, पता नहीं कहाँ से वो चूंकि आंख बंद करके जाप कर रही थी, तो एक सिक्का गिरने की आवाज. कहीं से एक सिक्का गिरा. तो उसने तो वो तो पूजा कर रही थी, नहीं समझ में आया क्या था. लेकिन वो जो पंडित जी थे लेटे हुए थे उस कमरे में, वो उठ के आए हैं और उन्होंने वो सिक्का उठा के उसको दिया है. बोला ये तो तुम्हारे लिए माता का प्रसाद है, तुम ले लो उसको. उसने ले लिया. और चूंकि रात का टाइम था, और मुझे लगता है कि शायद मिडनाइट में डिस्टर्ब किया, जो इंट्यूशन ऐसे हो रहा था कि पीछे कोई खड़ा हुआ है, ये सब चीजें समझ में नहीं आई. बट उसके बाद उसको बहुत अच्छे अनुभव हुए. बट गुरुजी अब अनुभव खत्म हो गए.
तो इसका रीजन क्या है कि अब खत्म हो गए? तो ये तो ऐसा है कि मैंने खाना खा लिया और खाना क्यों खत्म हो गया। दैट्स नॉट अ थिंग। चलो, नहीं, एक वो चीज तो ये है, आदत रहती ना, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो वो फिर लोभ हो गया ना। देखिए, लोभ से ही नहीं मिलता, वो त्याग से मिलता है, लोभ से नहीं मिलता। और एक बात, क्योंकि पुरस्चरण उन्होंने लिया है, आप जानते हैं मैंने कई बार मना किया है कि मंत्र जाप आप उस समय पे नहीं करना चाहिए। नहीं गुरुजी, उस वक्त में जब ये चल रहा था तो उसको बोध ही हाँ नहीं था इन सब चीजों का, हाँ, कुछ नहीं नहीं, समझ जानकारी गया। नहीं थी। तो हाँ उस समय में ये सारे, स्पेशली चंडी पाठ के अंदर जब ये नवाण मंत्र का जो जाप होता है ना, वो बहुत शक्तिशाली मंत्र हैं ये सब। हाँ और अगर आप उस समय में करेंगे तो ऐसे घटनाएं घटित होना स्वाभाविक है। लेकिन अक्सर क्या हो जाता है ना, उसमें आप जिसका नाम ले रहे हो वही नहीं, वो नहीं आके उनके गण आसपास आ के गए। लोग आ गए नो, हाँ। वो प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम काली से नहीं है, उसके साथ जो चलते हैं उससे होता है। लेकिन गुरुजी, जब हम अबोध बन के पूरा अपना समर्पण दे देते हैं, फिर प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? हम तो अबोध रूप में लेके उस सब चीजों को समर्पण कर दिया, हमको ज्ञान ही नहीं है कि अगर मुझे तो एक, माँ के अलावा और कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि माँ तो माँ ही है बस। तो उसके ऊपर वैसा छोड़ देना कि अगर कुछ हुआ तो तू देख ले, वो बोल के बैठे हैं क्या आप? डेफिनेटली यही बोल के, भाई तू जाने, तेरा तो काम जाने, करा लेगी तो हो जाएगा पुरस्कार, तो मुझे नहीं देखिए, पता, तो कराएगी। शायद उसीलिए उनको कुछ हुआ नहीं। नहीं तो आभा जी, अबोध होके अगर आप जहर पी ले, तो वो तो है ही रक्षक, रक्षा हो जाएगी हमारी। अगर रक्षक है तो, अगर हाँ, रक्षक नहीं है तो। तब तो फिर उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर एक अबोध बालक छत के ऊपर से कूद जाए, नियम बदल जाएगा? वही नहीं रहेगा, बदलेगा, नहीं बदलेगा। वही लेकिन रहेगा। अगर अगर आप स्तुति करने के समय अगर आपने सब कुछ उसको समर्पित करके रखा है तो ठीक। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि जो जो समय वर्जित है वो समय पे ना करें। जब जानकारी नहीं थी और गुरुजी, तो हाँ, फिर और स्पेशली जो चंडी पाठ कराते हैं ना, चंडी पाठ जो लोग आजकल तो बहुत कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे नहीं चंडी कराते थे। शांत देवी नहीं है, चंडी उग्र देवी है। उग्र देवी और है। उग्र देवी है, अगर उसका एक भी, मैं बोल रहा हूँ, एक भी शब्द अगर आप गलत पढ़े तो मैंने दंड मैंने होगा नहीं। देखा है आभा जी, मैंने देखा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हम्म। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, ये सारे मंत्र जो पंडित लोग जो रेगुलरली उसे करते हैं वही लोग करते हैं, क्योंकि चंडी पाठ सीखने से पहले ही उनकी बहुत सारी ट्रेनिंग होनी जरूरी है। एक भी शब्द पलट गया ना, उसका मायने बदल जाएगा और उसका रूप बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कृत शुद्ध होनी चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो अगर वैसा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर वो जनरली वो कुछ करती नहीं है, लेकिन वैसे करते तो आप भी कुछ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप गुस्से में हो तो दैट्स द तो ओनली थिंग। नहीं, ये तो सही है गुरुजी, गुस्सा आने का जब माहौल ही नहीं मिला तो अलग बात है कि हम गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन जब गुस्सा आने का जब सिचुएशन पैदा हो गई, फिर गुस्सा ना आए तो भी अलग चीज है। तो खैर जो भी है, आ, लेकिन अगर इतने सारे चीजें उनको मिले हैं तो उनको बोलिए कि अगर कोई पीछे खड़ा था या माँ का प्रसाद मिला, ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना जैसे मैंने कहा था कि मैं भी सोया और एक कॉइन गिरा, कॉइन अभी भी है। माँ का रूप है। हाँ, तो वही आजकल लग रहा है सबके घर में बरसाने लगी है वो। सबके घर में बरसाने लगी। चलो कोई नहीं, लेकिन कोशिश कीजिएगा, उनको बताइएगा कि उस समय पे ना करे तो बेटर है। लेकिन अगर फिर से एक्सपीरियंसेस करने हैं तो उसके लिए वेट ना करें। they did not wait for that experience to happen again, क्योंकि वो तभी होगा जब आप लीस्ट प्रिपेयर्ड हो उसके लिए। उसको बोल दो, उसको जैसे पूरा इतने ध्यान में थी कि पीछे कौन था या कौन आया कौन गया उनको पता ना चला ना, बिल्कुल वैसे करना पड़ेगा।
इट डजेंट मैटर कि एक्सपीरियंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इफ शी जस्ट लिटरली लेट्स इट गो, वो फिर से होगा और उससे बेहतर एक्सपीरियंस होंगे। क्योंकि अगर वो आई है वहां तक तो कुछ देने जरूर आई होगी। तो मैं इमेजिनेशन ये था ही नहीं कि समय क्या है उस वक्त में। तो जब काम घर का खत्म हुआ और जाप लेके बैठ गए कि टारगेट था माला पूरी करनी है, इस संख्या को पूरा करना है, बस ये था दिमाग में, उस जाप को पूरा करना है और ये 9 दिन में ये पुरस्कार पूरा होना ही है। तो वो चीजें रही होंगी, खैर जो भी है, बस कृपा है आपकी। हाँ, बस बहुत बहुत अच्छा ही धन्यवाद हुआ, गुरु। तो उसका आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर और सबके ऊपर। और आपका मेरे ऊपर बना रहे। बस धन्यवाद, धन्यवाद आभा जी। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। बस प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। अनीता जी प्लीज अनम्यूट सर। Guruji, I just wanted to ask you. Yeah, Sneha ji. The time now, I mean, जैसे अभी आप बता रहे हो कि even like I'm noticing in my life also, like sometimes जैसे आपने you started the class only by saying what he's saying, I already know the answer. You know, so these are very subtle things. जैसे आपने बोला, so sometimes like you know, at an odd time the door will bell will ring and I'll just say, "Haan, open the door to so and so." So these eerie things sometimes are happening. Sometimes, like for you're running short of time and you have good intentions, but because there's so much of things going on, suddenly for no reason a lift is coming empty and standing on the floor. You want to get down. You get down and you get a rickshaw. I mean, everything so falls into place, and you just look up and you smile. But so you are thankful. These little things also make your heart very happy. But there's so much knowledge, there's so much, like today now what you spoke about all this, I mean, it's so vast and different processes. So sometimes do we feel jo sahaj mein like jo hota hai, that's enough, or it's so addictive. Yeah. So you want to like, and now koi bolega, "Arey Chandi Path," like how she expressed so sweetly in the night, but she wanted to do it because how you have Devi Shakti as well as you have the Asur Shakti. And they say anything you do in the night or you do all these processes in the night could be, but that time your intentions were, I want to. So Ma came herself to protect, but like even Kundalini and all these. So it is better to enter all these zones with, like the masters and all, and not jitna humne sikha hai with y'all around, we feel safe, but we must do only that much, I feel. Absolutely. Because there are certain processes. I will share something very, very typical on that part. There was one a disciple of a teacher, and he was a teacher of Vam Mark, okay, left hand of God. And there was a book through which the teacher always taught all the students, okay. There was a prescribed book with him, so he was giving all the processes that was there in that book. And there was one student who was very good with that. He did very well. But the teacher said that there is one process you should not do it, that is there in this book. He trusted him so much that he takes the book and reads it and comes back and keeps it back. But the teacher said, on so and so place, there is a process which you should not do. And you know what we do? जब मना किया जाता है हम वही करते हैं. So he thought, oh, my teacher might be hiding something from me. उन्हें शायद लगता है कि मैं अगर वो सीख गया तो उनसे ज्यादा सीख जाऊंगा. But at times we don't know why they have stopped us. कभी कभी आपको मना किया जाता है क्योंकि वो आपको उसका वजह नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आपको वजह बताएंगे तो आप मानोगे नहीं. So what did this fellow did? The entire process is written. But the most amazing things that our rishis munis and done with especially this process, I'll tell you
one thing, then I will come back to the story that they have designed it so beautifully. आप देखना, the first front page of the any process book that was handwritten, they used to have a code for that. That code, until and unless you understand what that code is, you will never understand what is written inside that. You will miss one ingredient in that, and that one missing ingredient is like missing salt in your food. अब कितना अच्छा बना लो, नमक नहीं है, खाने का टेस्ट गया। वैसे ही वो क्या करते थे, एक शब्द को उसमें से गायब कर देते थे, and that was passed on through word of mouth. उसको बताया जाता था. So there was one ingredient that was missing in that. But what this fellow did is, despite knowing that, he started doing the process. And as I said, it was a left hand Bam Marg ka puja tha. So he sat in the night and started doing the job. What happened is, after that, what he sees, that two giants appear in front of him. One female, one male. Huge. And then the male, the male who was, he started creating a cooking zone, means चूल्हा बनाया उसने, बड़े बड़े चूल्हे और बड़े बड़े लकड़ी लाके उसके अंदर डालने लगा, आग लगाया उसमें. And this lady brought big pots from somewhere and kept it there on that for cooking. Then they both looked at this person who is sitting and doing the job. इसके तरफ देखते हैं. And they started coming closer towards him. क्यों? Because he was the food. He was the food for that. उसको ही पकाने वाले थे. And they came so close that he became unconscious. And then he woke up and he sees his guru standing by his side. And he said, I told you not to do this. If I would not have seen it, you would not have returned. तो ऐसे कई सारे चीजें हैं जिसके बहुत ही they have very, very typical impact on it. It's just like a knife. It can help you cut the vegetables. It can help you cut yourself down as well. If, as you rightly said, until it is done under the right guidance, this should not be done. And I never ever say anything as such to be done by any of you. हमारे सात्विक रूप में इतने सारे प्रक्रियाएं हैं जो काफी हैं. आप अगर नाम जाप भी करते हो, अगर नाम जाप भी सही तरीके से करते हो, वो भी काफी है. So all those things, those who are running behind power, those who want to showcase their power to others, वो सीख सकते हैं. अष्ट सिद्धि नवनिधि हनुमान जी के पास भी है, विनायक के पास भी है, लेकिन उसके तांत्रिक रूप भी हैं और वो ध्वंस करने के लिए काम में आते हैं. वो विध्वंसी प्रक्रिया है वो सब. And that is not required. And especially we are all family people. हमें इन सारे चीजों को नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए. जितनी तरीके से सात्विक रूप से पूजा की जा सकती है, उतनी सात्विक तरीके से आप शिवलिंग के ऊपर 2 बूंद पानी चढ़ा लो ना, वो काफी है. लेकिन वो समय जो आप 2 बूंद जल चढ़ाते हो शिवलिंग के ऊपर, आपका संपूर्ण समर्पण, वो पानी नहीं गिरा शिवलिंग के ऊपर, वो मैं खुद गिर गया उसके ऊपर. मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है. अगर मैंने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया तो 2 बूंद पानी काफी होता है. और चाहे आप कोई दूसरा मंत्र जपो ना जपो, कोई माला करो ना करो, मंत्र साधे सधे ना, मन साधे सब सधे. मतलब अगर मैं मंत्र को भी साधने बैठूं तो शायद युग लग जाए, लेकिन अगर मैंने अपने आप को साध लिया तो मैंने उसे साध लिया, क्योंकि वो और मैं अलग नहीं होते हैं. वी आर ऑल वन. लोग पूछते हैं कि क्या वो है? तो मैं कहता हूं, मेरा होना उसके होने का सबसे बड़ा सबूत है.
I'm just like the shadow, and if I am the shadow, there is a object. मेरा होना उसके होने का सबसे बड़ा सबूत है. और I can assure you only one thing, तू है. Okay, so thank you, Sneha ji. So so Hari bhai, please check. Shiva Guruji, oh, so he must have come up with some good questions. So let's see. Anita ji, if you can just try Hari bhai, if she is around. नमस्कार गुरुदेव. नमस्कार अनीता जी. हाँ गुरुदेव, मैं आपको बहुत समय से फॉलो कर रही हूँ, सुन रही हूँ. मेरा एक बहुत ही अलग तरह का सवाल है. ओके. मैं कभी किसी पूजा पाठ में नहीं रही, किसी तरह की पूजा पाठ मैंने कभी की ही नहीं थी ओके. लाइफ में. और एक चीज मेरे साथ हुई है जो मेरे लिए अभी भी एक तरह का क्वेश्चन मार्क है कि ये क्या है. ओके. ये मैंने अपने लाइफ में 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं जैसे कि मैं उस समय वहां पे हूँ, और वो भी स्वप्न नहीं है, स्वप्न में ही है, मतलब सोते समय ही है, लेकिन ऐसा फील है जैसे कि वो 3D विजन है, पूरी क्लियर दिख रहा है. और वो कोई ऐसा कंटिन्यूस भी नहीं है, वो ग्लिम्स है, मतलब फोटोज पिक्चर्स जैसे होती है ना, आपको एक सीन दिख रहा है और फिर वही सीन आप वास्तव में अपने लाइफ में होते हुए देखते हो, और आपको ये पता है कि हाँ ये होगा, कब होगा, क्या होगा, कहाँ से रिलेटेड है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. और शुरू में 2-3 चीजें तो मेरे और फैमिली से संबंधित थी, तो वो हुई, लेकिन मेरे आंखों के सामने कुछ हुआ, कुछ मेरे आंखों के पीछे भी हुआ, लेकिन जैसे मुझे वो बातें पता थी. और आखिरी में जो हुआ वो मेरे लिए बहुत थ्रेटनिंग था कि मेरे फादर के जाने के पहले का सीन मैंने देखा था. मेरी डॉटर ने सुसाइड किया, लेकिन उसके भी जाने का पहले का मैंने वो सीन देखा, पहले से ही देखा है. मुझे ये मालूम है ये चीजें होनी है, लेकिन क्या होनी है, किसके बारे में होनी है, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम. ओके. या अनीता जी, आपने मुझे बताया था इससे पहले भी. ओके जी. ओके. सो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपको, क्या खाली ऐसे ही चीजें आपके सामने आ रही हैं, अच्छी चीजें भी आती है? नहीं, अभी जब से जो सबसे लास्ट आया बिटिया के जाने के बाद भी मैं सो रही थी और मेरे को ऐसा लगा है कि जो कोई मुझे पूरा अपनी तरफ उठा रहा है, खींच रहा है. ओके. और मेरी नींद खुली कि मैं अपनी बिटिया को जो है अभी उसको याद करते हुए कि वो मेरे को उससे दूर लेके जा रहे हैं. ये मेरा अभी लास्ट विजन था. और कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं अपने आप ही आप लोगों के साथ में मंत्र जाप में मैं मतलब एक तरह से स्पिरिचुअल साइंस, मैं साइंस की टीचर हूँ, तो मैंने जॉब तो छोड़ दी, लेकिन मैं स्पिरिचुअल साइंस मतलब साइंस स्पिरिचुअलिटी को समझने की साइंटिफिक वे में समझने की पूरी कोशिश करती रही. तो मैं ईशा फाउंडेशन, गायत्री परिवार से तो मैं बहुत समय से जुड़ी हुई थी, लेकिन ऐसे पूजा पाठ नहीं करती थी. गायत्री मंत्र जाप फिर मैंने बाद में शुरू किया है ये सब, और अभी आपके साथ भी मैं जुड़ी हूँ. मैं उसी चीजों को समझने के लिए इन सब के साथ जुड़ी हूँ, और ये सारी बातें मुझे बिल्कुल साइंस के दृष्टिकोण से समझ में भी आ रही हैं. फिर भी ये क्या है, इसको मैं थोड़ा आपके मुंह से क्लियर करना चाह रही हूँ. ओके. सो एक है अनीता जी, लाइक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जैसे आप कहते हो कि यू आर इन ए सिचुएशन और यू नो लाइक व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट. अरे मैं देख चुकी हूँ, अरे ये होने वाला है, दैट्स हाउ ना, नेक्स्ट ये होगा. नहीं. as if it is happening in front of you right now again. नहीं. Okay. Just then how would you put forth? समय में मुझे कुछ ग्लिम्स ऐसे दिखते हैं जिसको जैसे मैं अभी आपको देख रही हूँ. Okay. कुछ ऐसा. और वो बस ये है कि ये होना, ये कुछ होना है, इसका ये मुझे ग्लिम्स दिखा है, बस इतना. Okay.
So which जनरल टर्म में लोग इंट्यूशन जैसा बात करते हैं उसे. ओके okay, but in your case it is very different, not just that intuition part that is working. You are actually able to see certain things. It's like I am there. मैं वहां हूँ. Certainly. मैं अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मैं वहां हूँ और मैं वो सब चीजें से अभी मैं सब कुछ देख रही हूँ ना, ऐसे अवेयर, वैसे ही अवेयरनेस वहां पे. वो नींद जैसा नहीं कि मैं भूल गई वो चीज, मेरी उसको एक एक डिटेलिंग मुझे याद रहती है. ओके ओके, तो 1 मिनट आंख बंद करो आप. जी. ओके, कीप योर आईज क्लोज्ड. आंख बंद रखिएगा. Okay, is there anything that you see? I'm not seeing anything, but pressure feel on my third eye. Hold on, hold on. Okay, so let's connect at that level then. To focus on your third eye, okay? And when you experience that pull or as if something has touched that or it get connected, just let me know. Huh? Now, while keeping that focus on your third eye, is that become a little lighter now? जो pressure जितना था, earlier it was intense, but now it's lighter. Light, right? Hold on. Okay, you open your eyes. Okay, Anita ji. So, anyways, I will talk to you later again on that part. Okay, so what I have to see, I've just checked that. I'll just talk to you. But I will not talk here in this space. I'll just have a word with you sometime later over phone or a video call. Thank you. Okay, fine. Yeah. Now, is it okay? Just check. It's okay. Good. Thank you, Neetaji. Shivguruji, please. Sir. This is what we call as just to the power of infinity. You that the higher energy realization for the Annapurna Puja. Annapurna Puja. You said that you will be. I still remember that. So she was. So, anyways, once these things are done, the next thing that I will put on to the priority list will be that. Okay. Okay. Because you people have asked for that, so and it is good actually. That's a really good process. Surely we'll do that. But you see, like these things that are coming up, especially that Mantra Purush kind of thing, no, that itself is and then we will slowly come to that space. So we will come. I remember that because what I've said, I remember that part.
And there are certain people, those who keep on keeping a track of the records of all that thing I have said and I have not told yet. And they keep on messaging me, Acha, this is also pending, that is also pending, this is also pending. Then I say only one thing, Shiva Guruji. If I start giving you processes, your life, entire life that is left with you, it will be over. My processes won't be over. That means what I'm saying is, if I give you every single day one process, then also it's not going to be over. Let alone every day. If every 3 hours I'm going to give you a process, then also it will be not be over. Every hour if I give you a process, I will not come down below that, because वो process करने के लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए. So I'm not going below that, or else every minute can be a process. So, but it is good, like you people are doing it with so much of interest. So that is the only thing I'm saying you. All this, I'm going through one by one, steps by step processes. You see, I'm also liking this pattern because these things have already vanished. I was talking to Haribhai that why there are certain vidyas that have they have become extinct, and I want to revive that. And if these people, the way they are doing it, if they still keep on connected and they really do the way I am saying it, I'm going to bring back all those back into this planet. So it's like pulling Ganga onto this earth. So all that you have to do is become the Bhagirathi. That's it. So, but yes, surely we will go into that process. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. So people are going to make me work anyways. Good. Okay. So Haribhai, if you can please Yes, elaborate the things that are coming up. Yes, I think most of the people, they are asking for this 2 days statement retreat. So at last, Manasbhai has given these dates. Yesterday, in the afternoon, he has given the dates for both Bhairav Puna and Haribhai, your voice is getting cut in between somehow. Yes, actually today I'm facing a little problem because I have changed my system today. So Okay. I've been trying 2-3 mics today. I don't know which one is working. Is the voice clear now? Or Yeah. Please go on. Okay. So let us talk about the Bhairav Puna. अब सभी के लिए 1-2 डेट्स आई हैं, जो कि पहला इवेंट रहेगा भैरव पुना 2 दिन के लिए. एंड वो हम लोग सोच रहे हैं कि 24th को इवनिंग यहाँ से हैदराबाद से चलते हैं. इट विल बी नाइट जर्नी रहेगा और हम लोग पोदिली पहुंचेंगे सवेरे मॉर्निंग. वहाँ पे फ्रेश अप वगैरह होके देन वहाँ से 2 घंटे का रास्ता है भैरव पुना. भैरव पुना में उस दिन रहेंगे, फ्राइडे के दिन. थर्सडे के दिन रात में निकलेंगे, फ्राइडे के दिन पहुंचेंगे हम लोग. फ्राइडे एंड सैटरडे विल बी देयर. सैटरडे एंड फ्राइडे हम लोग रहेंगे वहाँ पे. देन सैटरडे इवनिंग फिर से निकलेंगे हैदराबाद को, तो संडे मॉर्निंग तक पहुंचेंगे. सो दिस इज द प्रोग्राम. सो इसके लिए हम लोग मैक्सिमम व्हाट वी कैन अकोमोडेट इज समवेयर अराउंड 35 to 40 पीपल. सो मेरे को एक फिगर चाहिए कि कितने लोग इंटरेस्टेड है, ताकि मुझे बाकी अरेंजमेंट करने में, यानी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह यहाँ से अरेंजमेंट करना है. तो एक छोटा सा मैं एक पोल मैं शेयर करता हूँ. लेट मी नो. So just the thing is, Haribhai, like I believe like these are still the to come, so that we can make their recording. ये तो रहा अपना भैरव पुना का. एंड as Guruji announced in the starting of the session that he has already announced the dates for Swarna Karshan Bhairav. That will be on December 21st. So the people who are willing to participate in this event, please
take your take your tickets, book your flights, and accordingly do the arrangements. And, definitely, it is going to be one of the best program, as already last year you have experienced the event. It's going to be more grander, and greater than that. That is what we are trying to arrange. So what about the people basically, those who are there at in the different parts of the country and not able to travel, or different part of the world? yes, I mean, for that, I definitely will be arranging an online session. Okay. Let us see. I mean, as I'm going to share the Google form, so let us see how many people participating in physical and how many people participating. Shall we limit this to 21 this time, Haribhai? For Sona Karshan? Yes. So let it be 51. Because, at least minimum 51 should be. Okay. Let me because see. the kind of arrangements we are going to make, the kind of facilities we have, at least one is the right. Because last time even we thought of doing 21, as you No, I was thinking of 11 last time actually. Yes, but let us make it 51. I think we can easily If it works. Yes. Okay. And we'll try to do the same event last time where we did at same Kushali Bhavan, because I think that is the apt this kind of thing. Yeah, but definitely we would like to know how many people are interested in that. So I'll be sharing the Google form for both separately. Please let us know whoever want to participate in the session so that we can make the announcements. Okay. So anyways, Haribhai's voice was still not clear. So what he's saying is he's going to share Google Forms, 2 different Google Forms for 2 separate things. One is for Bhairav Kona, the other one is for the Dhanakarshana Bhairav. So you please fill up that form so that he has a number as to what kind of arrangements has to be done. That's it, Haribhai. Yes, ma'am. Thank you for that. And yeah, there is a small video for the Bhairav Kona, so that people will be able to, they will have an idea. Okay, so this goes the video for the place that we are traveling for the 2-day retreat. So Haribhai is going to play that video. That's what he says. This place is in Andhra Pradesh, and this place is known as Bhairav Kona. So Haribhai, even I have not seen the video. Good. So this is it. Yeah, this is a small glimpse of it. So that people will have an idea. So definitely you can search over a Google Bhairav Kona so that you'll have an idea what kind of place. So as it is written, like Sumaji messaged, one stone carved into one stone was sculpted to 8 Shiva temples. So means like still the energy and still the vibrations of that place should be intact, because as you could see, no restoration work has been done into it. कोई सोना चांदी नहीं लगाया गया, वो वहीं का वहीं, जैसे like as it was in the earlier stage, it is still in the primordial way it has to be. So could be. It is believed that it was constructed in the 1st century. So Agastya Rishi is also there, और जिनके गोत्र हैं उनके लिए तो और अच्छा है, फिर दिख जाएंगे शायद उनको वहां पे. Okay, so anyways, so but it is you people, you decide, because
once these things are fixed up, so Haribhai has to make the arrangements, and surely we will be taking help of the people out there. The people from that side of the country, anyways, they will plan everything for us. And major work with Haribhai, I just go and just roam around and come back, that kind of thing it will be. Right? No, there will be processes, because it is a space where Devi is there, and this is also a place where a Bhairava is there. So we'll be doing a certain specific processes for the Bhairavas. Okay. So it is again going to be one kind of experience, like just think of like the last one that we went into a resort and we did that much. So just think of we doing the processes in such places. But yes, the facilities will not be as great as it was there in the resort, because resort people have a very different way of arrangements. Here we have to manage certain things on our own. Might be we have to pack up each other in one room kind of stuff. And facilities food wise also, like as they were serving, like many items might not be there. So, and more important, it's not like just a pleasure trip. It's about enriching your own soul. It's enriching your own space. It's enriching your own path. अपना जो spiritual journey है उसको आगे लेके जाना है. तो शायद आपको भी थोड़े ऋषि मुनियों के जैसा जाना पड़े. And may you also experience their life. So it would be a good one. And जो रहने का जो जगह है, it is just like 30, like some 500 meters away from the temple itself, I believe. So we are yet to find out everything. But all that is you come prepared, that's it. Okay. So thank you everyone for being here today. And surely we'll meet this Sunday. And apart from that, surely the other plans will be shared with you. Just keep the dates in your mind and just work on that if it is possible for you. Okay. So thank you. But no one asked me any questions today. So I didn't answer anything today. I think that's the way it is. Might be we'll meet up again. Till we come back, we meet each other. I believe you are doing the processes that have been given to you. The 1 hour meditation. Then the Sunday, the meditation that was given about the navel point. And also the most happiest thing that you see, like people coming around you and burning you away also. So you must be enjoying your own burials, right? So please do those processes, because why these processes are being given is they are upcoming things for the future. आगे जाके उसके बहुत ही ज़्यादा मायने आने वाले हैं. If you do this right, I'm going to give you those processes. Because until you realize your difference between yourself and your body and mind, certain processes cannot be done. Uski koi bhi, you won't get the benefits of that. That's why I'm saying, please do the processes that you have been given. Okay. So thank you so much. Aham Brahmasmi.